वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी। आज वीडियो में आलोचना करिबा अगस्त तृतीय सप्ताह किछि करंट अफेयर संपर्क में। देखिबा प्रथम प्रश्न, व्हिच स्टेट विल लॉन्च द देश के मेंटर्स प्रोग्राम। देश के मेंटर्स नामक प्रोग्राम केउ राज्य लॉन्च करछंती? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तेर सठिक उत्तर होची दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट will soon launch the देश के मेंटर्स program to make education a people's revolution. The program aims to make India a global leader in education. Next question देखिए, who has been chosen as the brand ambassador of the program देश के मेंटर? सोनू सूद, दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार। और सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए सोनू सूद। सोनू सूद विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट्स देश के मेंटर प्रोग्राम। This was announced on August 27, 2001 by Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal. Next question देखिए, which union territory has approved the implementation of film policy 2021? केउ केंद्र शासित अंचल नुआ फिल्म पॉलिसी 2021 इंप्लीमेंटेशन करने पे अप्रूव देइछंदी? जम्मू काश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। और सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए जम्मू काश्मीर। The Jammu Kashmir government on August 27, 2021 approved the implementation of film policy 2021. Next question देखिबा, which state has become the second one after Karnataka to implement National Education Policy 2020? कर्नाटक राज्य परे केउ राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंटेशन करबा को जाउछंदी? केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश has become the second state after Karnataka to implement the National Education Policy 2020. It has announced the implementation of NEP in the presence of Governor Mangubhai Patel on August 26, 2021. एवं the Chief Minister of Madhya Pradesh शिवराज सिंह चौहान। Next question देखिबा, who among the following stormed into the quarterfinals of women's table tennis singles at Tokyo Paralympics 2020? भाविना पटेल, सोनाल बेन पटेल, साकिना खातून, ज्योति बालियान। और सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए भाविना पटेल। इंडियन पैरालंपिक्स टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल stormed into the quarterfinals of Tokyo Paralympics on August 27, 2021. Next question देखिबा, the ideals of liberty, equality, fraternity in the preamble of Indian Constitution have been borrowed from which nation's constitution? हमर संविधान रो प्रियम्बल्स रे वर्णित थिबा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ए टर्म टी केउ संविधान रो अणा हेछि? अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस। और सटीक आंसर होछि ऑप्शन डी फ्रांस। The ideals of liberty, equality, fraternity that appear in the preamble of the Indian Constitution were borrowed from the French Constitution. Next question देखिबा, which nation conducted
a successful test fight of Fatah 1 on August 24, 2021. India, Bangladesh, Turkey, Pakistan. आर सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी पाकिस्तान. Pakistan successfully conducted a testing flight of its multi-launch rocket system Fatah 1 on August 24, 2021. The rocket is capable for delivering conventional warheads up to range of 140 km. Next question देखिबा. Whose 111th birth anniversary was commemorated on August 26, 2021. केउ व्यक्तिंकर 111तम जयंती पालन कराई अगस्त 26, 2021. मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल. आर सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए मदर टेरेसा. मदर टेरेसांकर 111तम जयंती पालन कराई अगस्त 26, 2021 दिन. मदर टेरेसा जन्मग्रहण करथिले अगस्त 26, 1910 एवं मदर टेरेसा सेंट मेरी हाई स्कूल रे कार्य करथिले. मदर टेरेसा 1929 ईयर रे इंडिया को आस्थिले एवं तांको स्मृति रूपे रखिया पे हमें तांकर जन्मदिन को जयंती रूपे पालन करूछे. प्रति वर्ष अगस्त मास 26 तारीख को मदर टेरेसांकर जन्मदिन को हमें तांकर जयंती रूपे पालन करि आसुछे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. India has signed a pact with which nation for the larger ever infrastructure project? इंडिया वर्तमान केउ देश सह गुटी पाक साइन करछि जहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइन. ऑप्शन ए मालयसिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी मालदीव्स. और सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी मालदीव्स. India and Maldives signed this pact on August 26, 2021. Next question देखिए अबे. The UNSC has how many non-permanent members? UNSC अर्थ United Nations Security Council. United Nations Security Council रे केते जण मेंबर अछंती एवं तार नॉन परमानेंट मेंबर केते जण? 10, 5, 6, 7. तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 10. यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रे परमानेंट मेंबर 5 जण अछंती. अमेरिका, यूके, चाइना, रशिया एवं फ्रांस एवं बाकी 10 जण होचंती नॉन परमानेंट मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Where is the headquarter of ADB located? ADB meaning the Asian Development Bank. The Asian Development Bank is located where? New York, Manila, Geneva, London. तेबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी मनीला. The Asian Development Bank is a regional development bank that is headquartered in Manila, Philippines. फिलिपाइंस रो मनीला शहर रे एही बैंक रो हेडक्वार्टर अवस्थित. It was established on December 19, 1966. ए बैंक टी डिसेंबर 19, 1966 मसिया रे स्थापना कराइथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Which institute has developed India's first indigenous motorized wheelchair vehicle? केउ आईआईटी यूनिवर्सिटी प्रथम थर पई मोटर व्हीलचेयर vehicle निर्माण करछन्ती. आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे. तेबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास. IIT Madras has developed
the India's first indigenous motorized wheelchair vehicles. Next question देखिए. What name has Indian given to its operation to evacuate citizens from Afghanistan? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ମିଶନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ମିଶନ ନାମ କ'ଣ ଅଛି? ଅପରେସନ ହିମ୍ମତ, ଅପରେସନ ଶକ୍ତି, ଅପରେସନ ଭାରତ, ଅପରେସନ ଦେବୀ ଶକ୍ତି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅପରେସନ ଦେବୀ ଶକ୍ତି। India on August 24, 2021 termed the Afghanistan evacuation mission Operation Devi Shakti. It has for evacuate more than 800 people from Afghanistan after the Taliban's takeover of Kabul. Next question देखिए. India signed a $500 million loan to expand the Bengaluru metro rail network with which financial institution? केउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया लोन आनिची $500 million बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपांड करिया पे. ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी डब्ल्यूबी, ऑप्शन डी ईसीबी. एबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए एडीबी. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक on August 23, 2021 signed a $500 million loan for the expansion of the metro rail network in Bengaluru. Next question देखिए. Who will be the first female power lifter to represent India at the Paralympics? Paralympics रे भाग नैथिबा प्रथम भारतीय महिला पावर लिफ्टर की? प्राची यादव, रुबीना फ्रांसिस, टेकचांद, शकीना खातून. सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी शकीना खातून. शकीना खातून will become the first female power lifter to represent India at the Paralympics. Next question देखिए. Who will be the first Indian paracanoe athlete at Tokyo 2020 Paralympics? शकीना खातून, प्राची यादव, रुबीना फ्रांसिस, अवहानी लेखरा. आर सठिक उत्तर होची प्राची यादव. प्राची यादव will be the first Indian paracanoe athlete at Tokyo Paralympics 2020. Next question देखिए. Who was India's flag bearer at Tokyo Paralympics Olympic opening ceremony? Tekchand, Mariappan Thangvelu, प्राची यादव, देवेंद्र झाझरिया. एबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए टेकचांद. Javelin thrower Tekchand has been named as India's flag bearer for the opening ceremony of Tokyo Paralympics 2020. Opening ceremony will get underway on August 24, 2021. August 24, 2021 रे एई ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटित होइतला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Which state's chief minister led a 10-party delegation to meet प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी to demand caste-based census? जाति भित्तिक जनगणना करिया पई केउ राज्य एवं 10टी राजनैतिक दल मिसिगिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठारे डिमांड करछन्ती? गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड. एबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी बिहार. बिहार सीएम नीतीश कुमार led 10 parties delegation including Bharatiya Janata Party, Janata Dal, Rashtriya Janata Dal and other has arrived at South Block to meet Pradhan Mantri Narendra Modi to demand caste-based census. Next question देखिबा. Senior BJP leader Kalyan Singh passed away at 89. He was served twice as the chief minister of which state?
वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री कल्याण सिंह केउं राज्यर मुख्यमंत्री रूपे कार्य करथिले? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तेबार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश राज्यर मुख्यमंत्री रूपे दुई थर रूपे कार्यभार ग्रहण करथिले। थरे 1991 रु 1992 जाई एवं सेकेंड टाइम पे सेप्टेम्बर 1997 टू नवेम्बर 1999 जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा India's first smoke tower has been inaugurated in which state or UT? केउं राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार भारतर प्रथम स्मोक टावर उद्घाटन करछन्ती? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। और सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल inaugurated the first smoke tower in Delhi on August 23, 2021. Next question देखिबा Which nation's space agency aims to bring back soil samples from moon by 2029? केउं देशर स्पेस एजेंसी एम रखछन्ती कि 2029 सुधा चंद्र ठारू सॉइल सैंपल आनिबे? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जापान। तेबर सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जापान। द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA plans to launch an explorer in 2024 to land on moon Phobos to collect 10 gram soil and bring it back to Earth by 2029. Next question देखिबा Which country's president has refused to let his country become Europe's refugee warehouse? Belgium, UK, Turkey, France. तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी तुर्की। Turkey's president refused to let his country become Europe's refugee warehouse. Next question देखिबा Which vaccine make has sought approval for vaccine trial for the 12 to 17 groups in India? 12 वर्ष रु 17 वर्ष बयसर पिलानकु वैक्सीन देवा पई केउ वैक्सीन मेकर अप्रूवल पाइछि भारत रे? ऑप्शन ए J&J, ऑप्शन बी फाइजर, ऑप्शन सी मोडेना, ऑप्शन डी स्पुटनिक। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए J&J. Johnson and Johnson has applied for permission to conduct COVID-19 vaccine clinical trials in India on children aged between 12 to 17 years. Next question देखिबा Which nation has formally approved a three-child policy to prevent a demographic crisis? केउं देश रे three-child policy अप्रूव होइछि? जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी चाइना। चाइना रे प्रथमे 2-child पॉलिसी थिला किंतु वर्तमान तार बर्थ रेट कमी जाईछि तेनु चाइना वर्तमान 3-child पॉलिसी अप्रूव करछन्ती ता अगस्त 20 2021 तारिख रे अप्रूव होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Who is in line to be the first woman chief justice of India in 6 years? 6 वर्ष मध्य रे केउ व्यक्ति प्रथम महिला चीफ जस्टिस हेबे इंडिया रो? जस्टिस बीवी नागरथन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, नन ऑफ द अबव। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए जस्टिस बीवी नागरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा When is World Humanitarian Day 2021? August 18th,
August 19th, August 20th, August 21st. Correct answer ହେଉଛି option B August 19. Next question ଦେଖିବା. Which state's chief minister has announced smart health card for 3.5 crore people? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଫର 3.5 crore people? ओडिशा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बेंगल. सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए ओडिशा. ओडिशा चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक अनाउंस्ड स्मार्ट health cards under the Biju Swasthya Kalyan Yojana for 3.5 crore people in the state after hoisting the national flag on occasion 75th Independence Day on August 15, 2021.